All right, so this is going to be the solution to your exercise 10. The garage is planning to sell advertising leaflets to every house in the region. The region comprises 6 areas. You're going to prepare a spreadsheet to calculate how much it would cost. So there is a garage और उन्होंने कोई brochure या pamphlets बनाए हुए हैं that they are going to use for advertising. ठीक है, उन leaflets को वो distribute करते हैं in the region. This spreadsheet will be used to model the cost depending upon the supplier chosen. ठीक है, so I have a garage and you guys are all suppliers. ठीक है, so I can choose one to distribute my flyers in particular regions. ठीक, using a suitable software package, load the file JX leaflet. Now this is the file. अब अगर हम इसको review करें तो we have a chosen supplier over here, we have the supplier table, we have different suppliers, we have fixed fee, some number of properties, right? Area, table, properties over here, fixed fee, rate, and so on and so forth. So कहता है जी in cell A2 enter the name of one of the suppliers. These can be found in cells A7 to A11. A7 to A11 में हमारे पास क्या है? Suppliers है. और कहा है A2 के अंदर एक चूज कर लो. Which one do you want me to choose? Xmail. So one method is that you can type in Xmail. The other method is that you just put an equals to sign and select the cell, press enter. That will also copy the contents. ठीक हो गया? मेरा जी supplier कौन है? Xmail. क्या काम करेगा मेरे लिए? He will be responsible for distributing the advertising leaflets to different regions which are here. B21 enter formula to calculate the total number of properties in the region. B21 total number of properties in the region, sum of all the properties. ठीक हो गया? उसके बाद C15 enter formula that will display the fixed fee for the supplier selected in cell A2. The formula will look up the chosen supplier in the supplier table and return the corresponding fixed fee. So like I said, मेरा garage है, आप लोग सारे supplier हो. वानिया कहती है I'm going to charge 50 rupees fixed fee है मेरी to distribute the leaflets in so and so region. मीना कहती है मेरी 100 है, मेरू कहती है मेरी 200 है, मेरुनिसा कहती है मेरी 500 है. That is my fixed fee. I'm going to charge this no matter what. So मुझे ये बताओ, if my chosen supplier is Xmail, my fixed fee is what? 1000. Okay, that 1000 is going to be applied to all the properties ना in the region, right? So यहाँ पे हमने fixed fee calculate करनी है, उसने कहा है. So equals to V lookup, bracket open, lookup value. We are going to look at the chosen supplier. Again, when I replicate, this should not change. So make it absolute, comma, from where? The supplier table. Again, this will not change for replication. So I will make it absolute, comma, column index number 2, comma 0. Why 2? 1 year. 1 year. Why 2? Why column index number 2? No. Column index number. ये जो 2 डाले. Why do we add 2 here? No. Because in the table array, the corresponding value that I want is actually existing in column number 2. मुझे फिक्स फी चाहिए ना. फिक्स फी मेरी कहाँ पे है? कॉलम 2 में है. कहाँ के कॉलम 2 में? टेबल अरे के कॉलम 2 में है. तो आई वांट टू हैव दिस वैल्यू व्हिच इज व्हाई आई इनपुट 2. सो अब ये फंक्शन कर क्या रहा है? चोजन सप्लायर को देखता है, सप्लायर टेबल में फाइंड करता है, जहां पे उसको मिलता है उसके कॉलम नंबर 2 में जो उसकी वैल्यू है
उसको वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है। When I replicate this, what do you think the fixed fee is going to come for all properties? सबके लिए। क्यों? क्योंकि सप्लायर मेरा यही है। सो नो मैटर वो डीएचए में लीफलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो कैंट में कर रहा है, वो गुलबर्ग में कर रहा है, वो मॉल टाउन में कर रहा है, ही इज चार्जिंग मी 1000 रुपीज। यू गेट दिस? आगे चलो, अब यहां पे जरा बात समझनी है। In cell D15, enter a formula that will display the rate charged for each delivery for the supplier selected in cell A2. क्या निकालना है? Display the rate charged. This formula will look up the chosen supplier in the supply table and choose the correct rate depending on the number of properties for that area and return the corresponding rate from the supply table. अब जरा सिनेरियो समझो। हमने एक्समेल की बात की। एक्समेल कहते हैं मैंने फिक्स फी कितनी चार्ज करनी है? 1000। ये तो मैं करूंगा ही करूंगा। उसके बाद मेरा ये रेट है, वो टेबल में गिवन है। वो रेट क्या है? कहता है अगर ओवर 20,000 प्रॉपर्टीज होंगी तो मैं तुम्हें 0.002 रुपीज चार्ज करूंगा। अगर प्रॉपर्टीज ओवर 2000 होंगी तो मैं तुम्हें 0.0035 चार्ज करूंगा, और अगर ओवर 0 हुई तो 0.03 चार्ज करूंगा। There are 3 different rates depending on what? How many properties. मैंने एक बंदे को पकड़ा, मैंने उसे कहा कि यार ओके यू नीड टू एडवर्टाइज फॉर माय प्रोडक्शन हाउस, दीज आर द लीफलेट्स, ये तुमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब मैंने उसको लीफलेट्स दे दिए लेट्स से 5000। अब वो मुझे क्या कहेगा कि सर मैं इस काम के ना आपसे 500 रुपये तो वैसे ही चार्ज करूंगा, दैट इज माई फिक्स्ड फी फॉर डूइंग द सर्विस। ऑन टॉप if I distribute this to 2000 houses, I'm going to charge you this much for one leaflet. If I distribute this to let's say 3000 houses, this is my rate, and if I distribute this to 5000 houses, so this is my rate. So different rates आपने अप्लाई किए हुए। वो कहते हैं ना बल्क में चीज लेने तो सस्ती पड़ती है, ठीक है। सो यहां पे देखो, अगर ये लिखा हुआ है ओवर 0, अगर ये लिखा हुआ है यहाँ पे ओवर 0, ये लिखा हुआ ओवर 2000, ये लिखा हुआ है ओवर 20,000 अबव। सो इफ द प्रॉपर्टीज आर ग्रेटर देन 20,000, इसका मतलब ये है। इसका मतलब क्या है? ओवर 2000 का मतलब क्या है? 2001 टू व्हाट? 20,000। दिस इज एक्चुअली द लिमिट। और ये क्या है? 1 से लेके 1 टू 2000। सो अगर प्रॉपर्टीज 1 से लेके 2000 तक होंगी, आई एम गोइंग टू चार्ज यू दिस विच इज 0.03। लेकिन अगर प्रॉपर्टी 20,000 से भी ज्यादा है तो आई एम गोइंग टू गिव यू दिस रेट विच इज चीपर देन 0.03। ठीक है, नॉट सेइंग कि ये एक्चुअली में भी ऐसे ही होता है, बट यस जनरली व्हेन वी आर गोइंग फॉर मोर क्वांटिटी इट गेट्स चीपर। ठीक है, सो दिस वाज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द होल सिचुएशन। अब बात करो रेट की। मैंने सप्लायर मेरा कौन है? एक्समेल। कहां पे जाएगा? कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 27,000। कैम्ब्रिज में जो लीफलेट्स ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसका क्या रेट अप्लाई होना चाहिए? दिस इज द रेट। ठीक है, कैम्ब्रिज के लिए। और अगर वो क्लैक्टन में जाता है तो क्या है? 13,200 है। तो 13,000 इज नॉट ग्रेटर देन 20,000, दैट मीन्स कि उसका ये रेट चार्ज होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी गोइंग टू कैलकुलेट। अब इसे करेंगे कैसे? माई रेट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? माई रेट चार्ज इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? जस्ट द सप्लायर। द नंबर ऑफ प्रॉपर्टी से डिटरमिन करूंगा कि सप्लायर रेट क्या चार्ज करे।
ठीक है. So my rate is actually dependent on the properties, not dependent on the supplier. ठीक है. So I will put in equals to if the number of properties are greater than 20,000. मैं 20,000 भी लिख सकता हूं और मैं greater than ये भी कर सकता हूं. अगर मैं सेल को रेफर करूंगा तो रेप्लिकेट करते हुए मसला हो सकता है, तो मुझे इसको एब्सोल्यूट भी करना है क्योंकि 20,000 सबके लिए वही रहेगा ना. और अगर मैं सीधा इधर 20,000 लिख देता हूं तो फिर मुझे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 20,000 इज 20,000. सो लेट्स गो विद टाइपिंग इट आउट. उसके बाद हम सेल रेफरेंस को भी देख लेंगे. कॉमा, व्हाट इफ, कैन आई जस्ट टाइप इन 0.002 or should I type 0.002? That is the rate charge for over 20,000, है ना. लेकिन हम क्यों नहीं टाइप करेंगे? टाइप हम इसलिए नहीं करेंगे बेटा जी कि व्हाट इफ आई चेंज माई सप्लायर. इफ आई चेंज माई सप्लायर तो रेट चेंज हो जाएगा. सारे तो रेट चेंज ये वाला रेट नहीं चार्ज कर, सबका रेट डिफरेंट है. ठीक है. सो व्हाट आई विल डू इज, if that happens, if the number of properties are greater than 20,000, I'm going to look up my supplier, comma, from this table and take out the value from 1, 2, 3, 4, 5. So column index number 5, comma 0. Do we get this? सही है. अब मेरा क्या होगा कि इस तरह इफ आई चेंज माई सप्लायर तो वो ऑटोमेटिकली उसका रेट निकाल लेगा. इट विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ओनली 0.002, comma, value if false. What if your properties are not greater than 20,000? तो फिर हमारे पास ये वाला भी है रेट और ये वाला भी है. So we still have two more options. And I can go if the number of properties are greater than 2,000, then what? Then the same thing, we look up value, take the chosen supplier from the supplier table, but take the value from the fourth column. Do we get this? ठीक है. और आखिर में रह जाता है आपके पास ओवर जीरो वाली. ठीक है, दैट्स द लास्ट ऑप्शन. उसके लिए मुझे इफ लगाने की जरूरत नहीं है. सो आई विल जस्ट अप्लाई इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, look up my chosen supplier from this table, comma, take out the value from column number 3, comma 0. So that's the function. अब ये देखो, अगर मेरी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं लेट्स से 5,000 के ऊपर रेट क्या आना चाहिए विद एक्स मेल? बोलो आ गया. What if my properties are 1,500? You get it? अच्छा, अगर मैं सप्लायर को ए बी लीफलेट्स कर देता हूं फिर क्या होना चाहिए? 0.03 तो वही रहेगा. फिक्स्ड फी देखो ऑटोमेटिकली चेंज होगी बेस्ड ऑन द ए बी लीफलेट्स. अच्छा, व्हाट इफ द प्रॉपर्टीज आर 5,000, फिर क्या रेट हो जाना चाहिए? 0.2. and if 25,000, 1.2. ठीक है. सो इसका मतलब ये है. हाँ जी, हाँ, equals to v lookup, bracket O, lookup value is this absolute, comma, from this table we are going to take out the value. Now the column index number. A column index number is basically what, which column do I need to refer to. ठीक है. अब यहां पे if लगाना पड़ेगा मुझे. if
the properties are greater than this value, then the value should be what? 5. Column index number should be 5. If the properties are greater than this value, then the column index number should be 4. Otherwise, it should be 3. Okay? Comma. Sorry. I need to... Yeah, column index number, last option is 3. So value false is 3. And then we do this, comma. Exact match. ठीक है? देखो सही आ रहा है? ठीक है? अगर... So, if I choose preview post, the properties are 25,000. Preview post का rate 0.006 हो जाएगा. So it works. Fixed fee देखो 150 आ रही है. That is also reflecting to the change. You can do that as well. Shorter कह सकते हो. This is shorter. ठीक है? अच्छा जी. In cell E15, enter formula that will display the cost of the deliveries. This formula will multiply the number of properties by the rate. So we need to find out the delivery cost. Delivery cost is that there are these many properties and the rate charge for each property is this. So we just multiply it, we get the delivery cost. उसके बाद कहते हैं F15, enter formula that will display the total cost for this area. This formula will add the fixed fee to the delivery charge. So total cost क्या incur करेगी? अगर मैं leaflets distribute करवाता हूँ in Cambridge, तो क्या total cost क्या करेगी? Delivery cost plus the fixed fee. That is the total cost which is going to be incurred on me if I get for the deliveries. हाँ जी. रॉयल मेल कर दें. अच्छा मुझे ये बताओ कि ये प्रॉपर्टीज क्या है कैम्ब्रिज की. इनिशियल प्रॉपर्टीज क्या थी ये? आई हैव चेंज्ड इट ना. इफ यू कंपेयरिंग योर रिजल्ट यू नीड टू टेल मी कि कैम्ब्रिज की प्रॉपर्टीज कितनी है. 27,000. So you just change it to 27,000. हाँ बाकी ठीक है. बाकी आई डिड नॉट चेंज. सही है वैल्यूज. डिलीवरी और टोटल कॉस्ट में तो नहीं होना चाहिए. डिलीवरी तो बेटा ये देखो ना, एक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने का ये रेट है, तो जितनी प्रॉपर्टीज हैं उससे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट देखो, इसके अंदर क्या आ रही है 405. क्यों? अच्छा चलें वो आगे देखते हैं. Replicate the formula, we have done it. F21, enter formula that will display the total cost of the deliveries for all the areas. F21 over here, the total cost for all the areas, which is this. उसके बाद उसने कहा है कि format only the cells, fixed fee, total cost, delivery columns to currency in pounds sterling, 2 decimal places. So total cost, deliveries, and what? Fixed fee. This needs to be what? Currency with pound sterling, 2 decimal places. So we right click, go to format cells. Currency may we're going to find out pound sterling. Okay. So English UK, 2 decimal places. We click on OK. उसके बाद उसने कहा format only the cells. ये हो गया. Enter your name, center number in the footer. ये कर लोगे. कहते हैं by changing the chosen supplier in A2, use the spreadsheet model to find the supplier with the lowest total cost to distribute the leaflets. मतलब अपना supplier को change करो and find out the supplier who is going to charge you the least to deliver the leaflets. Save and print all the details on the supplier, just in page layout. So the whole table fits on this, make contents visible. Formulas का भी चाहिए और values का भी चाहिए. Okay. First of all, we need to identify which supplier is going to be the cheapest. So equals to
ए बी लीफलेट्स के साथ अगर हम जाते हैं तो हमारी जो टोटल कॉस्ट इंकर कर रही है वो 2096 है। कंसिडर कर लो 2096.40, दिस इज द लीस्ट। उसके बाद आई एम गोइंग टू मेक अ चेंज टू लेट्स से प्रीवियस पोस्ट। प्रीवियस पोस्ट कहती है हम 2029 पे जाएंगे, सो 2029.20 दैट इज द लीस्ट, विच मीन्स दिस इज नॉट द लीस्ट टोटल कॉस्ट, सो हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे अभी। आगे देखो, प्रीवियस पोस्ट के बजाय हम रॉयल मेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। रॉयल मेल चली जाती है 2381, विच इज ग्रेटर देन दिस, सो वी आर गोइंग टू स्टिक विद प्रीवियस पोस्ट। उसके बाद I'm going to change this to tendering leaflets. Tendering leaflets is 2700, again greater than this, so हम इसको भी नहीं चूज करेंगे। We'll go with Xmail. Xmail के ऊपर आ रही है 6386, that is again the highest amount charged, so our chosen supplier would be Privy Post. इसके ऊपर आपने रिजल्ट्स लाके एक वैल्यू व्यू और एक फॉर्मूला व्यू दोनों का प्रिंट आउट जो है वो पीडीएफ में रखें। सो दिस वाज द सॉल्यूशन टू योर एक्सरसाइज 10।